Pakistan's Balochistan province is once again under the international spotlight after a Pakistani Anti-Terrorism Court sentenced prominent Baloch rights activist Dr. Mahrang Baloch to life imprisonment. While Pakistani authorities maintain the conviction is linked to terrorism and the killing of a paramilitary soldier during a protest, rights groups and her supporters have denounced the verdict as politically motivated, calling it another attempt to silence peaceful dissent. The ruling has sparked widespread protests across Balochistan and renewed global scrutiny of Pakistan's human rights record in the province. Here's our report. आपने आज तक ये सवाल जो है ना आप में से किसी ने भी नहीं देखा कि बलूचिस्तान के साथ में चल रहा है। असद बलोच को। Balochistan has remained at the center of Pakistan's internal conflict for decades, with recurring allegations of enforced disappearances, extrajudicial killings, and restrictions on political dissent. Human rights organizations have repeatedly expressed concern over the shrinking space for peaceful political activism and the use of anti-terrorism laws against activists and critics of the state. बलूचिस्तान के वसाइल की लूटमार के लिए बलोच नस्लकुशी की गई है। Against this backdrop, one of the most prominent Baloch rights campaigners, Dr. Mahrang Baloch, has been sentenced to life imprisonment by an anti-terrorism court. She and fellow activist Sibghatullah Shahji were convicted on charges of murder and terrorism in connection with the killing of a paramilitary soldier during a protest in Gwadar in 2024. According to prosecutors, the two incited a mob that fatally attacked paramilitary soldier Shabir Ahmed. However, Dr. Mahrang Baloch was arrested in March 2025 while participating in what supporters described as a peaceful sit-in protest in Quetta. जिस तरीके से बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार क़यादत के केसेस में अचानक से तेज़ी लाई गई, जेल कोर्ट से लेकर फेसलेस ट्रायल्स तक और फेसलेस ट्रायल में वीडियो लिंक के ज़रिए बार बार हेयरिंग डेट देना और अदालत की जानिब से जो एक फ्रस्ट्रेशन, एक बेचैनी है, वो वाज़ेह थी। और जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर का बार बार इस बात पर जोर देना कि ट्रायल किया जाए और इनको कन्विक्ट किया जाए, तो इस बात पर हमें बखूबी अंदाज़ा था कि ऊपर से आए गए अहकामात अदालत को मिल चुके हैं और अब जल्द अदालत अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कार्रवाई करेगी। कल यानी 22 जून को ATA में जिस किस्म की गैर मुनसिफाना सज़ा हुई है, वो हम समझते हैं कि न सिर्फ फेयर ट्रायल के ऊपर बल्कि इस मुल्क के आइन और कानून का भी जनाजा है। The verdict has intensified political tensions across Balochistan, with activists warning that the sentencing reflects a broader pattern of suppressing peaceful political mobilization in the province. Supporters of Dr. Mahrang Baloch argue that imprisoning prominent leaders will not diminish demands for justice, accountability, and an end to enforced disappearances. Instead, they say the ruling is likely to deepen public resentment and strengthen the resolve of those campaigning for political and human rights. इतने अरसे से आप गुज़िश्ता 75-76 सालों से यही करते आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं। आज भी जो अमल आपने दोहराया है, जो जिस किस्म की एक नाइंसाफ़ी आपने बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं के साथ किया है, हम समझते हैं कि आप शायद इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी फतह है, लेकिन हम समझते हैं कि ये आपकी एक बहुत बड़ी कम अकली और बेवकूफ़ी है कि आप समझ रहे हैं कि महरंग को जेल में डालने से आपने पुरअमन आवाज़ों को कैद किया है और आप पुरअमन जो जद्दोजहद की कॉन्सेप्ट है आप उसको ख़त्म करके आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हम समझते हैं कि आपकी कम अकली है, ना कि आपकी समझदारी। The verdict has also drawn strong condemnation from Sindhi and Pashtun rights organizations. In response, the Baloch Yekjehti Committee called a province-wide shutdown across Balochistan, with widespread participation as markets and businesses remain closed in several areas. The sentencing has once again brought international attention
to allegations of enforced disappearances, arbitrary arrests, and restrictions on political dissent in Balochistan. The latest developments come amid continuing unrest, with nationalist groups accusing Pakistani authorities of using security laws to suppress political activism, while the government says the measures are necessary to combat militancy and maintain law and order.